हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। और वर्ल्ड कप 2023 के अंदर रन फेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लगा दिया 344 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन पारी खेली पहले कुशाल मेंडिस ने, उसके बाद सदीरा ने, पथुम निशंका इज आल्सो बैक इन फॉर्म। इसके बारे में और बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताउस रिजवी एंड चेतन नरोला इन दिस लाइव सेशन। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट ताउस भाई, चेतन भाई। ताउस भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। श्रीलंका पिछले मैच में भी दिखाया था बैटिंग से वो क्या कर सकते हैं। वो 430 के करीब चेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उसमें भी उन्होंने 326 टिका दिए थे। अच्छी बैटिंग करी थी कुशाल मेंडिस ने एंड ही हैज कैरिड दैट फॉर्म लाइक ब्रिलियंट नॉक। पहले कुशाल की बात करूंगा, हाउ इम्प्रेस्ड हैव यू बीन सो फार, क्योंकि 2 मैचेस एंड ही हैज बीन ऑन सॉन्ग। एब्सोल्युटली, और यही बात हमारी हो रही थी चेतन, अगर याद है आपको मैच के पहले। या Exactly. We were assuming about, we were speculating more about Pakistan, Sri Lanka's batting, and we were more confident about their batting, especially when they were coming from their defeat against South Africa, despite that being a low, high-scoring game, an impossible finish. यहाँ पर तो expect कर रहे थे obviously, because Sri Lanka has been in roaring form despite that loss. I mean 300 कवर करने के बाद साउथ अफ्रीका के बाद यहाँ पर एक और 300 340 मार दिया। तो I mean Kusal Mendis, look at the way he bats, man. Such a beauty to watch. क्या टाइमिंग है, क्या क्लास है। उन्होंने पहले मैच में दिखाया था जलवा साउथ अफ्रीका के सामने, सिर्फ टाइम कर रहे थे। आज उन्होंने सिर्फ कंटिन्यू किया है जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी दिल्ली में। आज the wicket was, could have been a bit difficult more than the Delhi wicket, but यहाँ पर उन्होंने प्रूव कर दिया। और 7-7 दिन था, दिन में पूरा बेक्ड विकेट और आसानी से थोड़ा बल्लेबाजी करने मिला। और उसके ऊपर सोने के सुहागा पाकिस्तान की बेहद निहायती घटिया गेंदबाजी। तो ये इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। कुशल मेंडिस को जो करना चाहिए था, जो वही किया उन्होंने आके अच्छा खासा इंप्रेशन दे दिया कि भाई ही इज देयर, ही इज द आई वुड से द नेक्स्ट बिग थिंग। फ्यूचर में बड़े होने वाले हैं ये और भी ज्यादा, कि वर्ल्ड कप से श्रीलंका बहुत बड़े स्टार निकलते हैं। आप देखें बहुत समय। And Srini, I will come to you for the comments. How impressive Sri Lanka has been. ठीक है, अगर हम उस लॉस को भी हटा दें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो जिस तरीके से बैटिंग श्रीलंका करता आ रहा है इस टूर्नामेंट में, वैसे करी है अभी 2 मैचेस के अंदर, कंप्लीट डोमिनेंस विद द बैट। बॉलिंग थोड़ा उनका फंबल किया फर्स्ट मैच में, लेकिन क्या बैटिंग करा है, स्पेशली कुशाल मेंडिस। Okay, first of all, I'd like to apologize अगर स्क्रीन ठीक नहीं है मेरा और आवाज आ रही है, क्योंकि I'm in a moving car. So if it's, I hope it's okay. You are audible. Second is, I thought it was pathetic on part of Pakistan what I saw today. Bowling completely lacked any kind of substance. I mean, I agree with Taus. Kusal Mendis, beautiful guy to watch. I mean, that one guy in the Sri Lankan team you can actually look forward to right now in that batting order. Who actually brings a lot of class. So yes, Kusal, great stuff there. But I somehow was, in the run-up when I was watching this Pakistan team in the Asia Cup, when they had just about arrived. This is the attack that I was really looking forward to. I agree that, they have suffered a huge deal with Naseem, kind of not coming. That injury has been a huge setback for Pakistan. Today, I actually saw his tweet where he was very excited for this team. But this attack lacks bite, and especially going into a game as big as the one against India that's coming up next in Ahmedabad. I'm now kind of, I have serious doubts now over the confidence that they can put in place. Yes. But Chetan bhai, do you also think it is more about Pakistan's bowling, like bad, worse, खराब bowling का ज़्यादा problem है, या श्रीलंका ने बैटिंग बहुत अच्छा करा है? What are your thoughts about this? नहीं, देखिए, it's a balance between both things. Sri Lanka has been batting well. अगर आप warm-ups भी देखोगे, and if you look at the Asia Cup as well, the Sri Lankan team, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि टूर्नामेंट में प्रीव्यू में भी कहा था और एशिया कप में भी कहा था मैंने, the Sri Lankan team reminds me a lot about 96. They are not world beaters, क्योंकि probably the ability is not up to that level. लेकिन over the last 1.5, 2 years with Dasun Shanaka as captain, they become a very, very close-knit unit, very tightly knit unit. और उनको मालूम है कि हमारी ability कहाँ तक है, and they are trying to maximize their ability. ये हमने इन्होंने टूर्नामेंट के क्वालिफायर्स में भी दिखाया कि the way they can play, they can dominate teams which are at their level or a little below their level.
अब at their level is a very important phrase because हम पाकिस्तान को हम लोग सब चढ़ा रहे थे, है नहीं कुछ वहां पे. नहीं सीरियसली, बिकॉज मैंने ये टूर्नामेंट प्रीव्यू में मैंने एशिया कप के बाद जो भी हमारी डिस्कशंस हुई है, बहुत डिस्कशन हुई है हमारी पाकिस्तान पे, बहुत सारी चीजों पे हुई है पाकिस्तान को लेके, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, मैं यही कहूंगा कि they have come to this tournament with 1.5 batsmen and 1 bowler. When was the last time कि पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं थे? आपके अगर आज भी वही हुआ है, सेम चीज हुई है कि अगर आपके 10-15 ओवर में, आप पहले 10-15 ओवर्स में आपकी विकेटें नहीं निकली हैं, then you do not have the penetration in your spinners, in your second and third choice pacers to take those wickets. नसीम शाह मेरे हिसाब से what is actually coming to watch, जो हमें दिख रहा है अब, Naseem Shah is actually more critical to this Pakistan bowling lineup than even Shaheen Afridi. Yeah. Because Naseem Shah has that bit of movement, has that skiddy ability, जो बुमराह के पास है. He's a Bumrah mold bowler to get the ball off the surface. Yeah. On these wickets, that would have been very, very important, but he's not there. Without him, Shaheen is struggling. He's struggling to create that pressure. As also the fact that कि आपके पास, जैसे मैंने कहा कि 15 ओवर जैसे ही फिनिश हो गए, you do not have spinners. Yeah. And when was the last time when Pakistan did not have good spinners? A proper length. Taqleen Mushtaq Ahmed, बीच में एक और भी थे यार, मैं नाम भूल रहा हूँ. They've had good spinners in ODI World Cups. Ajmal. Saeed Ajmal, Taqleen Mushtaq Ahmed, like, and that spanned across 25 years. Yeah. They always had great spinners to back their pacers. This Pakistan side does not have great spinners. They do not have a world-class spinner. India has 3, Sri Lanka has a couple, Australia has 1, South Africa has 1, New Zealand has South Africa 2, Maharaj and Shamsi both. वर्ल्ड क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है. शामसी को मैं वर्ल्ड क्लास अब 50 मतलब वाइट बॉल में तो ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते. मैं शामसी को मैं वर्ल्ड क्लास नहीं मानता. इंग्लैंड के पास 2 हैं. सो यू हैव एवरी टॉप कंटेंडर हैज वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, somebody who can back up your fast bowlers. Pakistan doesn't have that, and I think अगर आप श्रीलंका और नेदरलैंड्स जैसी टीमों के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हो तो किस मुंह से आप सेमीफाइनलिस्ट बन सकते हो? ट्रू. ताउस भाई, यहाँ पे एक चीज और है कि जो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स, स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर्स का अगर दिन खराब होता है तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है. लाइक बैड डेज आर रियली बैड. ये नसीम के साथ भी प्रॉब्लम है. अगर नसीम होते भी तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से आज श्रीलंका ने बैटिंग करी है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग करी है, वो भी रिदम तो खो देते अपना. आई मीन आई डोंट थिंक सो ही वुड हैव बीन, he would have played that containing role. What are your thoughts? Sorry. I'm at home, so there are some disturbances. So yeah, I mean absolutely यार इनके साथ प्रॉब्लम तो होता ही है रिदम, और ये कुछ नया नहीं है. ये अपनी गेंदबाजी भूल जाते हैं, लेंथ भूल जाते हैं जब पिटने लगते हैं, तो ये बड़ा लॉस तो है ही. लेकिन नसीम शाह का एक यही इनका ये वर्ल्ड कप में ये प्रॉब्लम लगातार चलता रहेगा, और ये आपको दिखता रहेगा, क्योंकि आपके पास जो तीसरा ऑप्शन लिया है वो भी खुद एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, 4 विकेट निकालने के बावजूद भी, वो ऐसा नहीं आपको वो कॉन्फिडेंस देते रहेंगे लगातार हर मैच में, नहीं रोकते हो. आपको पाकिस्तान को कुछ भी जरा सा भी कंफर्ट जोन में आने नहीं देंगे, तो ये आपको चलता रहेगा. एग्जैक्टली. शाहीन अफरीदी इज द ओनली बॉलर यहाँ पर जो भी एक दबाव क्रिएट, प्रेशर क्रिएट कर सकता है. अदरवाइज आई डोंट सी एनीबॉडी यहाँ पर. हारिस रॉफ के बारे में ही वाज रेटेड सो हाईली. यहाँ पर आके क्या हो जाता है उनको, यहाँ पर पूरा एक्सपोज हो जाता है लेंथ उनका. इनफैक्ट आई वाज, चेतन आपने बोला था या मैं, आई वाज लिसनिंग टू शायद वकार यूनिस, ही वाज सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में गेंदबाजी करना हारिस रॉफ जैसे बॉलर के लिए आसान है, क्योंकि यहाँ पर बॉल जब लेंथ पे पिच करते हैं तो बाउंस होती है और ज्यादा एंजॉय करते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. यहाँ पर डेब्यू करने से पहले नहीं, मैंने भी प्री शो में यही कहा था. उनकी नेचुरल लेंथ है, जो उनकी नेचुरल लेंथ है हैरिस रॉफ की, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कंडीशंस के हिसाब से है. उसको हिट करना मुश्किल होता है. यू नीड अ कैलिबर ऑफ समबडी लाइक अ विराट कोहली इन दैट फॉर्म, इन दैट मोमेंट,
जो उन्होंने वो Absolutely. छक्का लगाया था मेलबर्न में। बट आप अगर और वैसे वही देखिए बात आपने तो कहा था प्री शो में, वो आज रिपीट हो गई कि भाई वो पिट गए पूरे ये हो रहे, और लेंथ है, पूरे लेंथ वर्ल्ड कप जिस में तरह से डाल रहे थे, जितना हैरिस भी रॉफ पेस डाल हैरिस रॉफ अगर अपनी लेंथ चेंज नहीं करेंगे वो पूरे वर्ल्ड कप में पिटेंगे। या Absolutely, और उसी का ही फायदा उठाया श्रीलंकन बल्लेबाजों में, बैट्समैन ने, और कन्विंसिंगली क्लियर किया। देखिए, दिस इज समथिंग लाइक, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान विल एवर रिकवर, और हमको कोई होप भी नहीं था। हम वो तीन गेंदबाजों को देखते थे, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रफ। उसके अलावा कोई भी वहां पर मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा कॉन्फिडेंट था कि भाई सेमीफाइनल में आएंगे। ये सब वो सब स्पेकुलेशन एशिया कप के पहले थी कि भाई दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम कंटेंडर्स, could make it to this, all because of these three guys. एक बार इनका बैकबोन गया नसीम शाह, उसके बाद उनके सारे ड्रीम्स और होप्स खत्म हो गए, दिख गया एशिया कप में। उसके बाद हमको देख रहा है अभी क्या होने वाला। ये तो शुरुआत है भाई, इससे अभी आप जब इंडिया के सामने खेलेंगे, जब विराट आएंगे, रोहित आएंगे, शुभमन तो नहीं है, ईशान किशन ही अकेले डील कर लेंगे, तो भाई इनका मतलब कोई भी होप से छोड़ दीजिए। मुझे तो लग रहा नहीं है कोई भी किसी तरह से भी बाउंस बैक करने वाले। और स्पिनर का सवाल चेतन ने तो कह दिया है, कोई है ही नहीं इनके पास। बट श्रीनी, डू यू थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन के साथ एक प्रॉब्लम है दैट दे डोंट हैव अ प्लान बी? सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद शाहीन स्पेसिफिकली, द मोमेंट ही गिव्स अवे सम रन्स, ही जस्ट चेंजेस हिज साइड, लाइक ही जस्ट कम्स अराउंड द विकेट। सो वो प्लानिंग नहीं रहती कि ठीक है, एक दो ओवर में रन पड़ भी गए तो कोई बात नहीं, सब नहीं खा रहे, लेट्स मेक अ प्लान बी एंड गेट टू दैट कंटेनिंग जोन वाले उसमें। सी ट्रूथ बी टोल्ड, आपने पूछा पाकिस्तान के बॉलर्स के पास प्लान भी नहीं है, मैं कहूंगा पूरी टीम के पास प्लान भी नहीं है। आप 11-12 जो नाम देखो, इसमें एक हाथ भी बड़े प्लेयर को अगर इंजरी हो जाती है तो they are nowhere in the this thing. They don't have any options. I mean, for the last whatever 2 years that you've seen, you tell me what kind of rotation have they done? What kind of a bench strength have they shown? आज आप 15, आप you look at things from, let's say, an India perspective. You look at the bench, where a batsman of the caliber of is not pinching you. It's not pinching you. You are instead, this guy, or should we get this guy a chance? So that is a kind of problem of plenty, and forget problem of plenty. These guys across this thing, so open and South have it's about summed it up. When Chetan talks about spinners, there is nobody forget this team in the kind of longest distance. You just can't think of a name that's emerging from there from a spin perspective. And Pacer, as he said, I feel the only little this thing I'll give it to them is, Shine is missing on that partner also, that guy, who he could hunt to it. And that would have been Naseem. So both together would have, kind of gets hit. There is no plan B for him either in terms of, a bowling partner kind of a thing who he can turn back to kind of whatever, change and see what can be done. Try and talk to someone. There's there's nothing. If he's starting to get hit, he's just alone out there, and that's it. Once you begin to lose your rhythm, it's gone. Now, as Tao said, you like kind of you're about to run into a squad that is in red hot form. From 3-for-3 against an attack like Stark. I mean, they go ahead and just comfortably win the game without losing another wicket. It shows the kind of confidence that they're carrying. So yeah, these are things that they're going to matter for Pakistan big time. बट मैं थोड़ा सा श्रीलंका पे शिफ्ट करूंगा। हाउ गुड इट इज फॉर देम, कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं, नहीं या चेतन भाई, अगर no sorry not श्रीलंका की मैं अगर बात करूं, श्रीलंका की बैटिंग यूनिट की बात करूं, पिछले मैच में रन, इस मैच में रन, सो एज अ यूनिट पतुम निशंका की फॉर्म की बहुत बात हो रही थी। मैं भी पर्सनली भी मैं बहुत बड़ा फैन हूं, तो मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि उनके बड़े रन नहीं आ रहे। आज 50 कर लिए, एशिया कप में 240 के करीब कुछ करे थे उन्होंने, आज ही क्रॉस दैट 50 मार्क, एक माइलस्टोन आ गया है। तो कॉन्फिडेंस के लिए कितना अच्छा है मूविंग अहेड इन द टूर्नामेंट आफ्टर दैट काइंड ऑफ अ थ्रैशिंग दैट द बॉलर्स रिसीव्ड। नहीं, आई थिंक कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। आज आप जब बॉलिंग करोगे तो आपके पीछे 344 रन्स रहेंगे। आई थिंक दैट इज अ ब्रिलियंट वे टू स्टार्ट ऑफ दैन से जब आप
जब आप 400 कंसीड कर देते हो बैटिंग बॉलिंग से, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट माइंडसेट। और मैं देखो, टू माय माइंड, if there is due, and when I say due, early due, not due after 30 overs. Yeah, got it. अगर हमें 15 ओवर के बाद, अभी बहुत जल्दी है 15 ओवर की ड्यू के लिए, अगर 15 ओवर की ड्यू हमें मिल जाती है, then Pakistan can chase this, and even then they will need somebody like Babar and Rizwan to score big. Today is the day Babar and Rizwan have to. I guess today is the day when Babar and Rizwan both need to understand that a strike rate of 90 and 100 is not gonna work. देखो नहीं, ऐसे नहीं होता है कि स्ट्राइक रेट की बात नहीं है। आपको अगर आपको जब ये चेज करना है ना, तो आपको 335 35th ओवर तक विकेट्स इन हैंड लेके पहुंचना है। यू कांट रीच द 35th ओवर 4 डाउन। तो अगर उनको उसके लिए 90 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज दे आर कीपिंग द आस्किंग रेट इन कंट्रोल। आस्किंग रेट 7 के आसपास है, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट माय पॉइंट इज, आप फिर से बाबर और रिजवान पर पहुंच गए हो ना। आप मुझे बताओ, अगर बाबर और रिजवान आज नहीं खेले, कैन यू रियली से कि पाकिस्तान, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान विल नॉट विन दिस मैच। हाँ, that is for sure. That is, वो जीतने का चांस तो 10-15% ही दिख रहा है मेरे को। Very very big total, and I think you will see a different Sri Lankan side, which will work in a different way, which will bowl in a different way. They have what's his name? बिलाल आ गए, तीक्षणा आ गए हैं जी। So I mean I don't think Pakistan भी खंडर में बैठे होंगे, वो कमबैक के मूड में बैठे होंगे। There's more for Sri Lankan spinners out there, definitely, but obviously you need the early wickets. You need the you need the Sri Lankan spinners to be able to work it out properly. But my point is, Pakistan are not going to find it easy. there's just no way. बट ताऊस भाई, अगर यहाँ पे एक रिजवान और बाबर अच्छा स्टार्ट दे भी देते हैं, स्टेडी स्टार्ट दे देते हैं, दे कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग, रिक्वायर्ड रन रेट 7-8 के अंडर रहता है, तो भी आपके पास बैटिंग फायर पावर अगर इफ्तिकार नहीं है, तो हु विल स्कोर रन्स? क्योंकि शादाब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दैट इज अ डिबेट। इस सिचुएशन में ठीक है, शादाब ने करा है, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट डिसएग्रीइंग टू दैट, लेकिन कितनी बार, और इस सिचुएशन में जहाँ पे टारगेट इज ऑलमोस्ट 350, आपको नीचे आपके पास विकेटें नहीं है, आपके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, आपके साथ हसन अली और शाहीन होंगे, लेकिन शाहीन ने बैटिंग करी है, वो पीएसएल में करी है, ऐसा उन्होंने इतना कोई बहुत अजूबा नहीं करा है हाईएस्ट लेवल पे विद द बैट। तो आपके पास वो बैटिंग फायर पावर भी नहीं है। अगर बाबर और रिजवान नहीं चलते या चल भी जाते हैं, तो भी आप किस पे डिपेंड करने वाले हो? आप तो पहले ये बोल रहे हैं कि बाबर और रिजवान, आपने पहले ही 2 विकेट गवा दिया। अब विकेट गवाएंगे थोड़ी आपको मिलेगा मौका चेस करने का। नहीं तो 300 चेस करने है तो आपको वैसे ही स्टार्ट लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 50 का 100 का पार्टनरशिप तो ओपनर से आना है। फिर आता है बाबर आजम और रिजवान का रोल। देखिए 340 is like on this wicket is not an easy target, and especially when you have an opposition in Sri Lanka which has some really good spinners and good fast bowler in Patirana. तो मतलब आपको ऑन द टोज हमेशा हर दोनों एंड से रखे जाने वाले हैं इस वक्त। तो आप शुरुआत ही आपको अच्छी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब्दुल्ला शफीक जो फखर जमान की जगह उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अब उनको फुल्ली जस्टिफाई करना है। इमामुल हक तो मतलब आप देख लीजिए 15, 16, 20, 25 रन के आगे बढ़ते ही नहीं है। तो अगर आपको देखिए दूर, आप जीतने का छोड़ दिए टारगेट, आपको छोटे छोटे गोल सेट करना है, 10 ओवर, 5 ओवर, 10 ओवर, 15, 20, आप कैसे, तो मतलब जितना आप करते जाएंगे तो देखिए, और साथ साथ आपके पास ये भी रहेगा कि आप रन रेट कैसे बढ़ाएं। रन्स आप ब्लॉक करके ज्यादा से ज्यादा नहीं रख सकते, आप अपने आपको शेल में नहीं रख सकते, आपको मोस्टली डोमिनेट करना है यहाँ पर, साथ साथ आपको रन्स भी निकालना है। तो आप देखिए सऊद शकील, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान तक है। देखिए जब आपको कब इनकी जरूरत पड़ेगी, जब लास्ट में 15-20 रन चाहिए रहेंगे, तब शादाब खान आके इधर उधर टॉप एज लेकर आपको रन दे देंगे। मगर आपको मैच नहीं जिताएंगे जब आपको 100 का डिफरेंस रहेगा। ताउस भाई, नवाज को बैट्समैन मानते हो क्या आप? कैसे उनको मानना पड़ेगा, मुझे नहीं, उनको खुद को मानना पड़ेगा अगर जीतना है तो। बॉलिंग ऑलराउंडर, मानने में क्या है? नहीं वही तो सी, इफ्तिखार के बाद यहाँ पर आपको ये सब बोनस पॉइंट्स है, यहाँ पर बोनस रन मिलेंगे। ये आपको पार्टनरशिप बिल्ड करके नहीं देंगे, पार्टनरशिप आपके ऊपर वाले बिल्ड करके देंगे। और अगर पार्टनरशिप नहीं आई तो आप मैच भूल जाइए।
मगर मुझे ऐसा लग रहा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बाबर कुछ करेंगे, क्योंकि बाबर एक तो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, दूसरा एक विकेट मुझे लगता है अच्छी दिख रही है इस वक्त अभी भी अच्छी दिख रही है हैदराबाद की, इट्स नॉट दैट बैड। तो अगर जरा से भी मिस्टेक नहीं करेगा तो बाबर के ही कैन प्ले दैट रोल ऑफ एन एंकर, और चारों तरफ उनके इर्द गिर्द सब प्लेयर्स खेलते रहे। और लेकिन सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट चेतन यहाँ पर अच्छी शुरुआत देना, जो अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक को देना है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, एक बड़ा लेकिन चेतन टोटल चेस करना चेतन है। भाई यहाँ पे बाबर आजम को एंकर रोल प्ले करना, वो पहली बैटिंग करें या दूसरी इनिंग में खेलें चेस करें, वो एंकर रोल ही खेलते हैं और उसी वजह से शायद टीम का मामला जो है डामाडोल हो जाता है। यहाँ तो रन चेस बहुत बड़ा है, 250-300 में भी यही प्रॉब्लम होता है। तो फिर His आज जो anchor role is नहीं of no देखिए, जो use. आज उन्होंने, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन फिर जब आज Yeah. उन्होंने जो चेंज किया है दैट हैज टू वर्क। अगर Yeah. आप चाहते हैं कि अगर आप सिर्फ बाबर पे उंगलियां उठा रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैं आपके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बोल Yeah, रहा I हूँ। got it. हाँ. तो आपने आज चेंज किया है अब्दुल्ला शफीक को, इमाम उल हक को। देखिए सिर्फ बाबर और रिजवान के रन से आप आज नहीं जीतने वाले। हाँ, true. True. This is not, you're not chasing 150 in Dubai under lights. This is going to turn, this is going to take spin, it's going to be a really good। मैं तो चाहता हूँ कि वो चेज करने की कोशिश करें, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ क्रैकर ऑफ अ मैच अगर वो करते हैं चेज। बहुत जबरदस्त गेम होने वाली है, बट मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान ऐसा करेगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो यहाँ मैं एक आपसे चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे, लुकिंग एट दिस पाकिस्तानी यूनिट फॉर ऑलमोस्ट 2-3 साल से जो आपने देखा है, आपको लगता है कि वो इतना बड़ा टारगेट चेस करने जाने से पहले अपने कंधे गिरा चुके होंगे? Do you feel so? Because I feel so. They will not try this out. They will just try to play 50 overs from here on. ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनके कंधे ऑलरेडी गिर चुके होंगे। ये कहना बहुत मुश्किल है। होपफुली नॉट फॉर पाकिस्तान फैंस कि उनके कंधे ना गिरे हुए हों, लेकिन ये स्कोर ऐसा है कि ये गिरा देता है कंधे। हाँ. तो वही आज पाकिस्तान की मेंटल जो फोर्टिट्यूड है उसका टेस्ट तो जरूर है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आई थिंक 344 चेज करना है, में आपको प्रेशर को भी झेलना है, आपको you have to figure out different elements of your innings। जैसा मैंने कहा कि बाबर और रिजवान को रन्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हें नहीं बनाने पड़ेंगे। आपको अगर आपको ये चेज करना है ना, if they are 70 for no loss, then you can start to think कि okay पाकिस्तान is in the mindset। वो आपको mindset जो आप पूछ रहे हो ना मेरे से, वो आपको पहले 10 ओवर में दिख जाएगा। बाबर चले गए, वो आपको माइंडसेट दिख गया कि ये डिफीटिस्ट हो गया। लेकिन over the years, और especially because they've had different foreign coaches, जब से बाबर आए हैं वो माइंडसेट नहीं दिखता, वो कंफ्यूजन वाला वो जरूर दिखता है। They take it easy like they did against। This is what I wanted to hear. This is what I was looking for. But overall, it has never been कि अभी off late वो वाला mindset नहीं है। But again, Pakistan is Pakistan. Anything is possible and everything is possible, and they could prove us all idiots कि देखो हमने 340 चेक कर दिया। Yeah. Or we are the smartest cricket analysts in the world when we say कि Pakistan। Yeah. Actually, I was asking Chetan bhai. Yeah, go ahead. Yeah, just one thing. I have to go now, so I will see you guys tomorrow. Okay. Or in the post match. Bangladesh is almost down and out in the game against England. Thank you, Chetan bhai. Thank you for joining me this live session. Thanks. Thank you. Yeah, Srini, you were saying something. No, one thing that I wanted to just put out that in this day and age, in modern day cricket, where sport has moved so much to the professional realm, that age-old comment about Pakistan that oh, they're such an unpredictable side. On a given day they can whatever. ये तो किस दिन क्या कर देंगे कुछ पता नहीं. It doesn't speak well of a squad, anymore. वो 80s और early 90s में that kind of a narrative maybe चल जाता है, ये टीम का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. But in this day and age, you're kind of spending so much on, kind of the team combinations, getting a foreign coach, and you're trying to aspire to be a nation that kind of wants to go out there and win, right? I mean, I find a lot of similarities between how India at one time aspired to be the next Australia. And likewise, if you look at the current Pakistani setup, the aspiration level is India. They've always aspired to be, they've seen Babar Azam, they've tried to project Babar Azam in the mold of a Virat Kohli locally in their country. Like,
We had, because India created that Bleed Blue campaign against, the apparel sponsor. They went ahead and kind of, so it's nice. Copying is good because you're seeing something good happening somewhere in another ecosystem and you're trying to Motivate. imbibe it, which is not wrong. Yeah, so which is not wrong. So in a scenario like that, when you're trying to imbibe new things, learn new things, spending good amount of money and getting professionals on board, then after this thing is like, sounds like an insult. It sounds like an embarrassment when you have to say that इस टीम का कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या कर दे, and kind of Yeah. thing. So it's rather that they change it for themselves. Although, see, I'm pretty impressed by, Inzamamul Haq being in their setup. I was very impressed when, a guy like Misbah-ul Haq was there in their setup. Yes. Whenever these guys spoke, whenever whatever these guys did, their actions, their words, everything seemed to be, kind of helping Pakistan head somewhere. Because otherwise, these guys always had someone or the other who had no idea what he was talking. See, other day I heard Akib Javed, Yeah. I mean, much respect to the bowler. But the Yeah. other day I heard him say, he says, अरे नसीम खान, नसीम कोई बॉलर ही नहीं है, नसीम का कुछ नहीं है, आप इसको देखो, कोई कोई 22 साल का लड़का, आई मीन, आई डोंट नो, अगेन असम खान, Okay. नसीम शाह तो बेकार बॉलर है, Yeah, बेकार, there's he this actually under said 19, something on under those lines. 19 का खेला है वो कोई लड़का हाँ, खान जो है हाँ, इसमें। हाँ, यार, I do understand, young लड़का है, you want to, kind of, kind of motivate the young boy, I understand. But आप कैसे बोल सकते हो नसीम शाह बेकार है? I mean, please, right now Yeah. he's that one guy, one guiding light in that attack. I mean, he's the हाँ. one that they are missing. And as so, they've always had these kind of people who, kind of just loudmouths, just say something Randomly say for the anything. sake Yeah. of, yeah, yeah. So, and for once, I was actually seeing good people around. I love it when Inzamamul Haq speaks about, any level of cricket in Pakistan, or any cricket for that matter. Just listening to that man is so peaceful, Yeah. so soothing. And of course, what a बहुत What बहुत a बहुत passion. बड़े क्रिकेटर, बहुत So, बड़े Shani, क्रिकेटर. So yeah, you have covered so cricket I'm just to from conclude this, yeah, yeah, just to conclude this, I will mind that, it's high time that they begin to respect themselves and, kind of cut through this whole clutter and nonsense which says हम तो पाकिस्तान में किसी भी दिन कुछ भी कर सकते हैं. Doesn't augur well anymore. you have covered the Pakistani team for no different Pakistan team. अब क्या आपको लगता है कि ये वो जो साइड है, दिस सेटअप, दिस रेजिडेंट सेटअप, ये एक इकलौता सेटअप है जिसने ये गिव अप कर दिया होगा कि ये टारगेट हमसे चेज नहीं हो सकता? बिकॉज आई गेट दैट टू पर्सनली, आई फील दैट. You asking me? या यू. See, I mean, 340. Once anything beyond 344, mentally half the edge is gone, right? I mean, then you have to literally, then it's like moke pe chauka, you just go out there and, you see कि पहला opening कैसे होता है, क्या होता है. Otherwise, I don't say give up, but then maybe it's you know the reality. See, when you are a team that is together at any given point in time for a long time, you know what the reality inside the dressing room is. ना हर बंदे को at the end of the day पता होता है कि उसका बल्ला कैसे चल रहा है, उसकी टाइमिंग कैसे लग रही है, उसका बैट नीचे कितना स्मूथ है. आप फॉरगेट क्रिकेट, हम हमारे रोजाना लाइफ में, हम जब सुबह सो के उठते हैं, तो वी टेंड टू लाइक काइंड ऑफ फील आवर ओन, हाउ आवर ओन बॉडी इज, व्हाट इज इट टेलिंग अस, राइट? हम खुद इसको एक्सपीरियंस करते हैं और हम रोज पता चलता है हमको कि आज हमारा दिन कैसा होने वाला है. लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक सो वहां पे भी पता तो होता ही, क्रिकेट आप इतने लेवल पे खेलते हो तो आपको पता तो होता ही है कि आपका ये, आप हो लायक इसके कि नहीं है. एंड उसमें अगर आप नाप तोल के अगर परफॉर्मेंसेस देख लें पाकिस्तान के, तो वेर इज द सरप्राइज हियर? अगर मतलब वो आधी तो उनकी जो है वो बाबर के टिकी हुई है. फकर जमान, आई डोंट नो, आई मीन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ग्रेट बैट्समैन, कैन पुल इट ऑफ. But when was the last time that you actually saw him pull off anything? So, and again, I mean, that guy Aga, um, आगा yeah, I सलमान. mean, yeah, I mean, he was averaging so well. Like, whenever given an opportunity, he was trying, but then suddenly the tide Things has change. turned. So I don't see the spark. I don't see the spark there. And you Yeah, but Just to for the chase anything beyond 340, you require a spark.
Just for an update for our viewers, Taus bhai, England have won by 137 runs. Bangladesh have been bundled out for 227. Yeah. Yeah, so I would like to add here कि देखिए शोल्डर गिराने की बात नहीं है यहाँ पर. आप आज की तारीख में when it comes to T20 क्रिकेट, this is the modern day era. आपने देखा था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जब 400 बनाई थी, कैसे रिस्पॉन्ड किया था श्रीलंका ने, कुछ ही दिन पहले की बात है. तो वही माइंडसेट है, दैट इज द माइंडसेट दैट यू हैव टू गो इन विद, एंड दैट इज पाकिस्तान. एग्जैक्टली दे हैव टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिल्ली, एग्जैक्टली व्हाट श्रीलंका डिड. और मुझे लगता नहीं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज के एरा में मॉडर्न डे क्रिकेट में माइंडसेट में आप जिस तरह से गेम खेलते हैं, जिस तरह के बैट्स आपके पास है, जिस तरह के विकेट्स आपके पास अवेलेबल है, I don't think so. It's quite a difficult task. Mentally रहेगा, it's going to be tough. But then you can still draw confidence from everywhere else where situations are, where you have seen people going and chasing those kind of scores. I mean, श्रीलंका वाला मैच है यार, लास्ट मैच दे क्रॉस 300. मतलब आप एक सोचिए 340 है ये, और वो 300 के ऊपर 328 के ऊपर चले गए थे. तो अबिलिटी है पाकिस्तान में, है अबिलिटी. वो अग्रेशन के साथ खेलेंगे, वो नाप तोल के साथ में खेलेंगे. तो आई थिंक इन दिस मॉडर्न डे एरा 350 तक आप आराम से चेस कर सकते हैं. तो आई डोंट थिंक it's going to be a tough one, but they should. The will is needed. The will is needed to get those runs. Yeah, Shini. No, see, chasing is not a thing. I mean, yeah. So as Thou says, it's very true. Like kind of chasing 350 is a target that modern day teams should aspire to chase. And that's not a big deal from a stat and a number driven perspective. I remember one But of then, the India-Pakistan game when they went after 350 ka target, they were 344, restricted to 344. The 2004 India tour of Pakistan, 5 one-days that we played there. We won the last one where we won that series. I think in the end, VVS Lakshman scored 100 in the fifth one in Karachi, 107 I think. But all those matches went beyond 300, 320. Yeah, all of those were high-scoring games, and all of them just came down to the last over, if I remember. So yeah, I mean rivalry. But then look at that squad also. ना. उस टीम को भी तो देखो, वहां पे मिडिल ऑर्डर में यूनिस खान, Yusuf, Mohammad Yusuf, that squad was a different squad. So that's what I'm saying. So what I was saying is right. Numerically, mathematically, yeah. I mean these stats do make sense that you can probably kind of. It's not a big deal to chase 300, 320, 330 totals anymore. But the point here is that it also speaks what comes into account, what comes into question is what is the mental balance of this team? How motivated does this team appear to pull off things like these? Okay, I mean, it could be a random day where you go out, a random one-off chase you pull out, but you're in the middle of a tournament. It's so you're coming here in the middle of a tournament as big as this one with a mindset, and that mindset is going to be at play here. Because there's no one-off game. Everything that you're doing here is part of a longer strategy. It's part of a longer picture. It's part of a big picture that you gotta pull off, right? So it'll all add up. So that those are pressures which add at multiple levels. Kind of work ethics, everything. So again, I mean, all of those add to the whole thing. So it's not going to be easy. Unless somebody plays a freak knock, and then it turns the tide for them. Which is what Babar Azam did in 2017. I mean, वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला फाइनल वाला नॉक, ऐसा कुछ खेल दे, पागल नॉक खेल दे किसी. That was more about 2 no balls. आदमी बस उस टच में भी जो था, उस ले में था, उस फ्लो में था, और वो क्या मतलब आई एम सेइंग दैट आपको उस तरीके का पागलपन चाहिए फ्रॉम समबडी. तो हमारे यहाँ तो खैर विराट तो हमेशा उसी जोन में होते हैं, तो हम चल जाते हैं तो वो, लेकिन आई डोंट सी दैट स्पार्क हियर. चलिए देखते हैं क्या होता है. वी जस्ट होप कि एक एक्साइटिंग मैच देखने को मिले, वन साइडेड ना मिले. वेल, थैंक यू श्रीनी, थैंक यू ताउस भाई फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन. ऑलराइट, बाय 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 बाय.